हेलो टीचर्स, मैं वंदना सक्सेना इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी हाउ टीचर्स यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट्स फॉर अश्योर्ड लर्निंग इन ऑनलाइन क्लासेस। सो कोविड के बाद एक तो चीज़ बहुत ही तय हो चुकी है दैट ऑनलाइन learning and blended learning is here to stay. And how as teachers we can assure that students continue to learn and grow even across this platform in a self-paced manner is a trick that comes across alive if we are using formative assessments. ये तो हम सब जानते हैं कि formative assessment is an assessment that takes care, it is directed by the teachers, but it keeps the student voice alive when assessing the child continuously and comprehensively throughout the session. So online platform पे एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है that we to keep the class more engaged, हमें बहुत सारी इनोवेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना पड़ता है, जिससे कि वी हैव टू ओवरकम the barrier of not being able to see the child physically in the classroom. Physical proximity and gauging the body language and expression of a child is a giveaway, and it's a natural formative assessment that we as teachers use in the face-to-face physical interaction class. However, online assessment में ये facility नहीं होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का रोल या वैल्यू ऑनलाइन असेसमेंट में और ज़्यादा डीपन हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन इन्वॉल्व चिल्ड्रन in the classroom. First and foremost, lay down clear expectations of the lesson that is being taught in terms of defining learning outcomes very carefully, simply and clearly. So once if the children know that this particular lesson is leading to this kind of learning, तो वो एक focus बन जाता है, and when we are focused we listen better, when we listen better we learn better. The second way is to involve children in their own assessment, train them in developing the parameters and rubrics, but initially start sharing the parameters and the rubrics with the child, जिसके हिसाब से बच्चे की assessment होगी। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि जब वो क्लास में बैठे हैं whether they are engaged or not engaged, they are actually being assessed for their learning. Supposing we make that क्लियर टू द चिल्ड्रन कि जिस तरह से आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे वो भी आप एक लर्निंग आपकी असेसमेंट का पैरामीटर बनेगा, तो बच्चे थोड़े से जाग जाएंगे। उससे ज़्यादा वो तब जागते हैं जब उनको जॉय ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस होना लगता है, वो भी क्लास में। और जॉय ऑफ लर्निंग उनको कब एक्सपीरियंस होगा? जब उनको हम छोटे छोटे स्टेप्स पे सही टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और इसी को कहते हैं assessing the child's learning, knowing about the level of learning, testing the previous knowledge of learning. All that can be done if we continue to use formative assessment during the class and after the class, especially on the online platform. ये मेरा मानना है, ये एक्सपीरियंस है। when the teacher uses formative assessment actively in different ways in the classroom, there is less cheating, because at the end of the day the child cheats to show the best version of himself. अगर बच्चे को ये पता लग गया कि जो एंड रिजल्ट है सिर्फ उसके लिए नहीं वो असेस हो रहे, बट उनकी पार्टिसिपेशन और किस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं क्लास में और किस तरह से अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हैं लर्निंग में, मतलब कि किस तरह से वो जॉय ऑफ लर्निंग को अपने बिहेवियर में डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी भी असेसमेंट होती है। तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन विल बी मोटिवेटेड टू लर्न and their self-esteem will be higher. And all these things are very, very important to assure learning on the online platform. So teachers, keep your focus, keep on practicing formative assessment, because we only evolve to use them better by practice, practice and more practice.